A very good morning to all of you. I will start my today's presentation with Mastermind Credo for Human Asset. We believe that money is the easiest, cheapest and the most common thing to give to our team members. Thus, we will always try to give them something that is beyond money. We will treat them respectfully. We will always upgrade their capabilities and help them live a meaningful life. We will empower them to be a contributing human being and ensure that they live a prosperous life in every sense. And as we all know that we all are practicing no data on paper. Moving forward, my today's topic for the presentation is 7 PR trends you need to know in 2016 is an article written by an entrepreneur. His name is John Hall and this was published in recent editions of Forbes. The reason I selected that part of Credo of Human Asset is I am going to talk about public relations. So when I use this word and take this word public relations, it is basically managing relationship with, in a nutshell, with all the stakeholders, which also definitely includes employees of any organization for that matter. मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है to share my learning and see to the most feasible execution of the recent trends into PR from our organization perspective. And in order for me to see that, I would like to narrate all the 7 trends which I have read in this article. A brief introduction of John Hall is, he is a co-founder and CEO at Influence & Company. It's an organization that helps position key individuals as industry influencers and thought leaders. He says he writes about entrepreneurs, thought leadership and content marketing. Before I get into the 7 trends that I am going to describe, मैं अपना presentation एक example के साथ शुरू करूँगी to emphasize, to indicate कि एक PR department का, PR vertical का किसी भी organization में क्या power होता है. I would like to take an example of Snapdeal. So when Snapdeal had started, they had outsourced their PR vertical, the PR functionality to an organization called as PR agency called as Value 360 degree. So in the beginning, they had pivoted itself an inventory-led leader in the e-commerce segment, and it finally repositioned itself as a marketplace model. As PR agency, the biggest task that this organization was playing is to be capturing all the key communication of the organization and making it reach to the right audience. उस टाइम पे जब स्नैपडील आया था, एक मेजर चैलेंज जो इस पीआर एजेंसी ने फेस किया था वो ये भी था कि उस वक्त ई कॉमर्स और ये ऑनलाइन पोर्टल्स का इतना ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं था, मीडिया आउटरीच भी उतना नहीं था, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट था. एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, अपना ब्रांड जिस चीज़ के साथ उन्होंने शुरुआत की थी उसको फिर से रीपोजिशन करना कंज्यूमर के माइंड स्पेस में was getting a little difficult. Out of lot of alternatives that they had tried, one of which that really worked well was CSR initiative, जहाँ पे स्नैपडील ने उत्तर प्रदेश के एक गांव को पूरा अडॉप्ट किया. गांव का नाम है शिवनगर और उस गांव को उन्होंने रिक्रेस्टेड रीनेम कर दिया स्नैपडील नगर के नाम से. उस गांव में उन्होंने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए स्नैपडील ने. वहाँ के लोकल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स को काफी रेनोवेट किया, इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर पंप्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. So this particular news was captured by both national and regional media houses, and there was a lot of buzz which was created about this organization. There was a significant buzz around the brand and the site witnessed a record number of visitors. So by this example, I just wanted to let you know that how if we work creatively on different strategies and if we try a lot of initiatives into this particular vertical functionality, how and where it can take the organization. Now coming to the first trend, the traditional press release is no more, paper is a thing of the past. आज के डेट में कोई भी फेमस मैगजीन, कोई भी फेमस न्यूज आर्टिकल, कोई भी फेमस न्यूज़पेपर को अप्रोच करने का उतना सेंस नहीं बनता unless you are a big organization like Apple or any other famous organization.
बिकॉज आजकल ज्यादातर चीजें सब लोग ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं. इनफैक्ट न्यूज़पेपर के लिए भी लोग आजकल पहले उठते ही फोन में एप्लीकेशंस पे टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई और न्यूज़पेपर का ऐप देख के न्यूज पढ़ते हैं. So as communication professionals, as PR professionals, it has become very mandatory to embrace new and different ways of getting news about our offerings and accomplishments to our audience members. There can be a lot of medium like we had discussed in my last presentation also, and there are a lot of online digital presentation that has happened in this hall. So there are various platforms which can be used to be publicizing our content. Through social media, develop relationships with industry leaders and influencers and incorporate visuals in our messages to get the attention of journalists, which will also spread our message. So the point actually means is जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, जो भी कंटेंट हम अपना पब्लिश कर रहे हैं, उसमें जितना ज्यादा विजुअल मैसेज होगा उतना ही ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट होगी और उतने ही ज्यादा जर्नलिस्ट अट्रैक्ट होंगे मीडिया हाउसेस के. Moving forward, the second PR trend says thought leadership will become growing PR budget priority. Let us first understand thought leadership होता क्या है. Who is actually a thought leader? An industry expert who shares his or her expertise with a broader audience for the purpose of educating, improving and adding value to the industry as a whole. So एक वो प्लेयर जो अपने शोल्डर्स पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि मैं इस पूरे इंडस्ट्री में जितने प्लेयर्स हैं उनके नॉलेज को अपग्रेड करूंगा. कैसे? अपने आर्टिकल्स द्वारा. जो भी कंटेंट मैं लिख रहा हूँ और अलग अलग वो ब्लॉग्स में हो, वो लिंक्डइन पे हो, फेसबुक पे हो और फिर ट्विटर पे हो और फिर ऑटोमेटिकली सारी चीजें सिंक्रोनाइज भी हो सकती हैं. तो जो भी मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिसमें मैं ऑपरेट कर रहा हूँ. थॉट लीडरशिप कम्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल बट इट रिप्रेजेंट्स द ब्रांड. This is way to humanize our brand and connect with customers on a more personal level. तो जो कंटेंट आप एज अ लीडर लिख रहे हैं, आप उसमें कितना पर्सनल टच दे रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एंड यूजर्स के साथ, उसको कितना ह्यूमनाइज इज द वर्ड रिटन हियर, कितना उसको ह्यूमनाइज कर रहे हैं, कितना उसको अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं. दिस इज व्हाट थॉट लीडरशिप इज ऑल अबाउट. And I would like to take an example over here to explain this whole concept. So there is an organization by the name, it's an American company named by Leggett and Platt. It's one of the lead players in mattress manufacturing. And Mr. Mark Quinn is the VP marketing, marketing department के vertical के vice president है ये. Let's follow Mark Quinn. He is the VP of marketing with Leggett and Platt. More than 2 decades of experience into mattress industry and वो अपना एक blog लिखते हैं Q's Views के नाम से. He is also serving as the chairman of the board for the Better Sleep Council. Now let's see, when he got into this thought leadership model, what was his end objective, the marketing goals that he was looking at with content marketing. First thing, he wanted to position himself as a marketing and wedding industry expert through his articles. Second thing, he wanted to drive traffic to his blog Q's Views and expand his influence in the marketing and wedding industries. And the third thing, he wanted to build a lot of awareness around specific campaign for Leggett and Platt. Let's see how he did it. Let us understand 8 steps of thought leadership. First is determine your audience. Who exactly are those people? आपके current customers, आपके potential customers, आपके potential investors, आपके potential partners या general public, जिनके सामने you want to bring your credible image, you want to build your credibility in front of. So first thing is figuring out that. Second is how do you develop your message? कुछ pointers जो आपको help करेंगे अपने message को develop करने में. If you know the pain points of your customers, what are the objections that customers can make? Who are your competitors? Rather, what kind of message your competitors are making? What is the core value of your own organization? And what are the misconceptions of the industry that you are writing the articles for?
So these are the few points which will help you to develop an efficient message. Because I am taking the example of Mark Twain, वो ये बोलते हैं कि जब उन्होंने अपना मैसेज डेवलप किया, एक चीज उनके दिमाग में क्लियर थी कि why people have to perceive mattress industry as a boring industry? Why can't mattress industry be a fun industry? So he uses a lot of argumentative statement, a lot of argumentative statements, a lot of brash tone, a lot of humor, and a cheap humor you can think of. He uses in his article what he wants to achieve at the end is to keep the audience engaging. तो वो चाहे argumentative article से हो या वो किसी मतलब बिना किसी argument के हो, but he wants to keep the audience engaging. Third thing is research publications. Now वो ये कहते हैं आप एज ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को फोर्ब्स जैसी मैगजीन में पब्लिश करना चाहोगे, बट व्हाट इफ योर ऑडियंस इज नॉट रीडिंग अ मैगजीन लाइक फोर्ब्स, राइट? तो आपको ऐसे पब्लिकेशंस को ढूंढना पड़ेगा जो आपका ऑडियंस पढ़ रहा है. वो कौन सी किताबें हैं, वो कौन से न्यूज़पेपर्स हैं, वो कौन से मे बी वेबसाइट्स हैं जो आपके ऑडियंस फॉलो कर रहे हैं. सो नो मैटर फोर्ब्स की क्या ब्रांड इमेज है या मार्केट वैल्यू है, हमें उस पब्लिकेशन तक रीच करना है एज कम्युनिकेशन प्रोफेशनल जो आपका ऑडियंस फॉलो कर रहा है. देन टेस्ट टॉपिक आइडियाज. नाउ किस टॉपिक पे लिखना है, वो आपके दिमाग में जो भी टॉपिक है वो ये कहते हैं कि आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं और पहले आप देखें कि ऑटो सिलेक्शन में वो क्या दिखा रहा है, दैट कैन हेल्प. देन रीच आउट टू एडिटर्स. When we reach out to editors, one thing he suggested is never send a complete article. We have to just send a pitch. Also, to stay very active, उस particular editor की website पे you can give your feedbacks, critical, non-critical, and be active on that particular website. Then writing content is the key thing. ये सारे 8 steps में जो सबसे important है वो है how and what you are writing. It has to be valuable for the readers. जो भी readers तक को जा रहा है वो उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है. आपका आर्टिकल सब्सटैंशिएट करना चाहिए जितने भी क्लेम्स आप दे रहे हैं और जितने भी फैक्ट्स आप दिखा रहे हैं उसको. तीसरी चीज, the focus has to be on educating people and not promoting yourself. And then once any person reads it, it has to stimulate some sort of action, some sort of thought process has to get stimulated to be taking some action. So this is how he says has to be the content. Then maximize your content, publish it whichever platforms are available. And last thing is live thought leadership. Now he says having 2000 followers. If there is an organization who has 2000 followers and if there is an organization who has 20 followers, that doesn't mean 2000 वाला ही market leader है और 20 followers वाला market leader नहीं हो सकता. ये कोई पैरामीटर नहीं हुआ किसी भी organization की credibility को test करने का. Again, जो भी content आप लिख रहे हैं, it has to give an engaged and authentic social media presence rather than just बिल्डिंग ऑन नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स. तो जितने फॉलोअर आ रहे हैं आपके कंटेंट में वो अपने आप को एंग्रॉस करें, वो अपने फीडबैक दें, वो वेट करें आपके रिप्लाई का. इस तरह का कंटेंट होना चाहिए. लेट्स सी व्हाट आर द रिजल्ट्स मार्क्स रिजल्ट थ्रू आफ्टर दीज 8 steps. What were his results? Mark has gained international recognition as a marketing and betting industry expert. Mark's article have been shared 1142 times and Mark has seen a 300% rise in traffic to his blog. तो thought leadership आपको क्या देता है, ये देता है. मतलब this is just a one example, but इस तरह के results आपको मिलते हैं when you are practicing a concept like thought leadership for your organization. Coming to third trend, content amplification will become even more critical. We have to know how to leverage and amplify content to get more eyes on it. In addition to the social media, infographics, the white papers, articles, the sales process, marketing newsletters and even email signatures can get more of the right eyes on our content and amplify our message. Now what this point means is जरूरी नहीं है कि आप जो न्यूज आर्टिकल, जो आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा
सेल्स प्रोसेस को लेके जो आप कोलेट्रल्स यूज करते हैं, स्मॉलेस्ट थिंग लाइक योर सिग्नेचर इन द ईमेल, उस सिग्नेचर में क्या लिखा हुआ है वो भी आपके मैसेज को एम्पलीफाई करता है और सही लोगों को आप तक लाता है. राइट आईज ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन योर कंटेंट. नेक्स्ट इज नेगेटिव ब्रांड एडवोकेट्स विल बी प्रिवेंटेड थ्रू PR. नाउ क्योंकि आज चीजें इतनी इजीली एक्सेसिबल है, एनी कस्टमर और एनी स्टेक होल्डर हैज so much leverage to be writing about any bad experience, and they can go and write it in various platforms available. So one of the major responsibility of PR people is firstly to ensure कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. PR process has to be that way that even if negative कोई comment आ रहा है किसी भी client की तरफ से या किसी भी stakeholder की तरफ से, तो उसको कैसे effectively deal करना है at the first place. And second place and the second thing is we have to establish process to avoid negative experiences in the first place. And next thing what we have to do is there is a book written by an author J. Bear, Hug Your Haters. What he says is it is always very good to be kind of liking and loving your haters rather than running away from them, क्योंकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है. So why ignoring your haters can be a toxic spiral. The theme of the book is that, and he says that जितना ज़्यादा आप अपने haters के साथ interact करोगे और उनको calm down और dilute करने की कोशिश करेंगे effectively, उतना ही आपके organization के लिए अच्छा होता है. And that is also one of the major lookout and functionality in this department. Fifth is online reputation management will be necessary. All the viewers, all the visitors, publication editor or journalists search, the first thing they do is search who you are, what your company does. And while they are doing this search, the search can go one of the two ways. Either they like what you are doing, what they see and follow through, or they don't. So there is both the possibility. आपके पास जो भी विजिटर आपके वेबसाइट पे आपके ऑनलाइन विजिबिलिटी के पेजेस पे आता है, they have few seconds, क्योंकि हर रोज उनके पास इतना कुछ होता है सर्च करने के लिए, they have barely few seconds. So it depends on us कि कितना solid content हम अपने ब्रांड के लिए, अपने एक्सपर्टीज के लिए उसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, and then only essentially we will pass the test of that visitor. To better manage the online reputation and get the message to the right audience, it's important to consistently create and publish quality content. एक बार कुछ करके रख दिया and then we can't be आराम से बैठ गए कि नहीं ये तो हो गया, my task is done. We have to be consistent enough. It has to be very periodic कि हम कुछ quality content regularly post कर रहे हैं. Next is true influencers will win over number of followers. इस पॉइंट का बस वही मतलब है कि यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपके hundreds of thousands of क्वांटिटी में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, क्वांटिटी में है और अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से they are not in love with your organization and they are not producing any results for your organization, then it is of no use. The bottom line is कम लोग हों लेकिन आपके साथ engaging रहे, आपके एक्टिविटीज को फॉलो करें, आपके एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हो एंड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट ऑलवेज. Earning followers naturally and not buying them is also one thing. कि हम जितने followers को, there are lot of unethical and shortcuts to be increasing these number of followers. So he suggests that we as organization shouldn't be practicing that ever. जितने भी followers हमें आ रहे हैं हमारे पास वो naturally आने चाहिए, हमको कोई भी अनएथिकल तरीका नहीं अपनाना चाहिए. It's better to have a smaller, higher quality network than it is to have a larger one with no engagement. Last is use of paid promotion and social ads will continue to rise. So at times we think कि यहाँ पे आज इतनी सारी चीजें इतना easily free में available है तो पेड पब्लिसिटी की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये इस आर्टिकल में लिखा गया है कि इस साल में और इसके आगे वाले सालों में भी पेड सोशल एड्स की जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा बढ़ती ही जाएगी.
कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट 2016 का एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है which says more than 50% of B2B marketing professionals use social ads and promoted posts. More marketers and communication professionals are turning to paid social efforts, and those efforts are seeing higher and higher returns. We should look for new ways to invest in paid social ads and reach new audience. Thank you so much. My own learning from this article, when I read, I didn't think that I will be presenting on it. However, then I thought that anyways this is a parallel thing which I am anyways doing along with my daily tasks and all of that. So I want to upgrade myself and my knowledge in this particular section. So since I am doing all the research and trying to figure out what all new things I can learn and implement here, let me present on the same thing. And all the things which I have presented here were all new learning to me, and I pursue to be enhancing my knowledge in this particular field. My scope of improvement, maybe I was actually thinking to be bringing a small talk of this person on the same topic, and I thought कि अगर थोड़ा भी time last में 2-2.5 minutes बचेगा तो I would play that video, which I could not. And second thing, I hope थोड़ा शायद practical examples और लाने चाहिए. That's about it. Group learnings. I'm really desperate to share this learning with you all. Thought leadership that you have mentioned over time. Sometimes you need to also think about realities. You talk about two major learning, right? Determine your audience. If you are trying to do some sort of PR and then you are just for the sake of numbers, you are enter anyone to that hall, right? Thereafter you are trying to engage that person through whatever services that we are providing. So at that time, that makes much more sense who are sitting in that hall, right? That is about determining your audience, develop your message. Whatever develop your message about your pain zone or your objection that you are facing through your sales process, that needs to also be considered as a learning. So these were a very learning point. I mean, these were learning points. The new terminology I learned about it's online reputation management. So it's a very good in future research topic for me. That what in detail is online reputation management. That is my. पहला लर्निंग एक्स्ट्रा PR इंडस्ट्रीज भी अवेलेबल है जो मास्टर्स है ये पर्टिकुलर फील्ड की, इसका हम यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं. सेकेंड, जो मुझे पूरे आर्टिकल से एक फील आया दैट इज कि अब ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है और ऑफलाइन से ऑनलाइन PR की तरफ. एंड PR डजंट मीन ओनली एंगेजमेंट, इट मीन्स कंटिन्यूस एंगेजमेंट. सो सेकेंड लर्निंग इज कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस. यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, और वो भी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे जो आपका एक्सपर्टाइज लेवल पे रखे. थर्ड लर्निंग इज PR डिफाइंस योर ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशनिंग. तो समवेयर आपका PR डिपार्टमेंट जो भी है, PR जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका एक्सटर्नल एक पूरा ऑरा क्रिएट करता है. तो दैट इज द की. वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए क्योंकि वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है मार्केट में, और उसके हिसाब से अगर बाकी सारी चीज़ें फॉलो नहीं होती है तो वो एक नेगेटिव फील देगा. Thank you, everyone. Rinki, before I get into everything, I want you to get back to the main slide, objective one, the first slide. What I liked about the what I liked about your overall presentation, the first thing which was striking from my point of view was the credo reading. It was actually very good, very good. All the emphasizes the right words, because this is what I think as an organization we want to communicate to our employees and all our team members. So that's one thing. It was very good. Before I get into this objective part, I'll get into the first thing, which is audience interaction, जो कहीं पे भी नहीं आया पूरे प्रेजेंटेशन में. I was actually wanted कि आप कहीं पे thought leadership के बारे में 2-4 questions पूछते कि क्या है thought leadership, because it is new concept. Again, online management, जो आपका online
हाँ रेपुटेशन मैनेजमेंट इज अ न्यू वर्ड राइटली शेयर्ड बाय कि उसके ऊपर भी हम रिसर्च कर सकते हैं जैसे गौरव ने बताया। तो ये हम आप ऑडियंस में देखने में बहुत सारा स्कोप था जो नहीं हो पाया, बट ओवरऑल एक और फीलिंग मुझे आ रही थी कि पूरा कंटेंट जो आप लेके आए ना वो आपके पीछे के प्रेजेंटेशन में डिजिटल पीआर में इजीली यू नो एम्बाइब हो सकता था, इंटीग्रेट हो सकता था। दिस इज व्हाट एक्चुअली डिजिटल पीआर इज ऑल अबाउट, योर हाउ यू कैन डेवलप योर पीआर स्ट्रेटजी थ्रू कंटेंट मार्केटिंग, थ्रू सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, थॉट लीडरशिप. Now, why I brought this objective slide was you have specifically written execution of the recent trade into PR from our organization perspective, and in the whole presentation, not a single time you use the word mastermind. कि mastermind की तरफ से हम क्या कर सकते हैं. हाँ, बहुत सारी चीजें हमने as a viewer और आपने भी शायद उसी लेवल पे बात की कि इसे हम यूज कर सकते हैं in our overall PR strategy. But अगर आप ये objective के अंदर लिख रहे हो तो इन पर्टिकुलर आप क्या क्या करना चाहोगे मास्टरमाइंड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि दिस इज व्हाट यू हैव रिटन इन योर ऑब्जेक्टिव. सो दैट्स वन थिंग. व्हाट हैपेंस इज इफ यू रीड एनी आर्टिकल एंड इफ यू फॉल इन लव विद दैट आर्टिकल तो आपको समझ नहीं आता क्या हुआ क्या जाने दो. दैट्स व्हाट आई कैन सी राइट नाउ कि आपके साथ शायद वही हुआ होगा, क्योंकि 9:44 तक आप सेकंड पीआर ट्रेंड पे ही थे. तो लास्ट के 6 मिनट में आपने 5 पीआर ट्रेंड एक्सप्लेन किए, जबकि पहले 2 पीआर ट्रेंड में आपने ऑलमोस्ट 14 मिनट्स स्पेंड की. जो थॉट लीडरशिप के ऊपर जैसे ही आपने थॉट लीडरशिप को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना चालू किया वो थोड़ा डाइल्यूट होने लगा आपका ओवरऑल इम्पैक्ट. दैट्स व्हाट इज द फीडबैक इज. एग्जांपल्स इंडियन कंपनीज, हर पीआर ट्रेंड में मैं कनेक्ट कर रहा था कि शायद इसने ऐसा कुछ किया होगा, शायद इसने ऐसा कुछ किया होगा. जो आप ब्लॉग्स की बात करते हो कि पेड पार्टिकल, क्योंकि आज ऐप का जमाना है तो आप इजीली कुछ ना कुछ ला सकते थे इंडियन कंपनी से एग्जांपल जो आपने अपने खुद की लर्निंग में भी शेयर किया कि और ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो सकते थे. सीआर एक्टिविटी बाय स्नैपडील लगभग मेरे लिए नया था और बहुत अच्छा था लर्निंग. लास्ट स्लाइड पे जो आपने लिखा था द बेस्ट प्रमोशन इज नॉट बीइंग प्रमोशनल, तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. दूसरी आपने जो आर्टिकल आप लेके आए हो उस आर्टिकल के ऑथर के बारे में भी आपने बताया. रेस्ट आई विल कवर अप 1 to 1. थैंक यू सो मच. Rinki, if I had been in your place, ये जो 7 ट्रेंड थे, I would have not addressed whatsoever. मैंने 7 दिखा दिए होते कि ये 7 चीज़ें जिसमें से 4 बहुत ही कॉमन चीज़ें थी, जैसे कि पेपर इज अ थिंग ऑफ पास्ट, उस पर ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं थी. योर मैसेज टू बी एम्प्लीफाइड, आप उसको इस तरह से प्रेजेंट करो कि लोग उसको रिसीव करें, उसका एम्प्लीफिकेशन होना चाहिए. सो दैट वुड हैव बीन एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. रादर 2 मिनट में 4 पॉइंट निकाल देते. एक तीसरा पॉइंट था नेगेटिव ब्रांड, हग योर हेटर्स. समझ में आता है एक लाइन में बहुत कुछ है, यू कुड हैव अवॉइडेड दैट. एंड ऑनलाइन रेपुटेशन नहीं बट ट्रू इन्फ्लुएंसर्स. सो वी डोंट नीड क्वांटिटी, वी नीड क्वालिटी ऑफ पीपल हु आर इन्फ्लुएंसर्स, दे शुड बी योर फॉलोअर्स. सो ये 3-4 चीज़ें अगर मैं निकाल देता 2 मिनट में तो मैं 3 पे ज़्यादा डिस्कस कर सकता था. एंड जो 3 थी, 1 था थॉट लीडरशिप, अदर वॉज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, एंड तीसरा था पेड प्रमोशन एंड सोशल एड्स. इस पर आप ज़्यादा बात कर सकते थे, विच आर मोर मीनिंगफुल लर्निंग्स आउट ऑफ द होल आर्टिकल. इसके एग्जांपल्स आप ला सकते थे, कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस जो इसको और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते थे. तो यू मिस्ड आउट ऑन द एग्जांपल्स एंड यू राइटली सेड यू आर लर्निंग दैट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वर मिसिंग. इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो एग्जांपल देने पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, बट यू डिड नॉट हैड एग्जांपल्स फॉर दैट. एग्जांपल्स नहीं था, ही राइटली सेड इंटरेक्शन नहीं था, एंड यू आल्सो मिस्ड आउट ऑन द वीडियो. सो अगर इसको स्मार्टली प्लान करते तो 7 पॉइंट पहले दिखा के ऑब्जेक्टिव के बाद तुरंत यू कुड हैव सेड कि आई वांट टू टॉक अबाउट 3 टुडे बिकॉज़ 4 आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. छोड़ देते उसको. सो स्मार्ट प्लानिंग ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज वन थिंग व्हिच यू कैन ऑलवेज लुक एट. What are the most meaningful things which applies to our organization and our audience? उसी पे हम बात करें. Yeah, rest of the things I don't think I'm going to get into that. I felt like you liked the content, and your voice throw, confidence, voice modulation, everything suggested that Rinki is found and arrived kind of thing. Lost somewhere and then found and arrived kind of feel was there. Grooming was good as always. So these are the things I feel like if you must have planned it smartly, ज़्यादा better हो सकता है. Thank you. Thank you everyone. I think everyone knows there is a Diwali celebration.